Good afternoon, everyone. How are you today? I hope all of you are very well, fit and fine, healthy, enjoying, and at the same time practicing, studying. So you are doing all these things, okay? And these things are important, right? Okay. So today in the class, we are going to do some topics, and these topics are related to previous class. So there were two exercises that I shared with you. So we are going to talk about that first. And then after that, we are going to do a fresh topic that is known as present continuous. It's easy, important, and easy to use, but again, you need to understand that what are those situations where we use such sentences. And of course, structures are always important. So if you talk about any situation, the structures are there, right? How to make positive sentences, how to make negative, how to ask questions. All these things are important. And on the top of that, it is also important that you understand these situations. And based on these situations, you use different sentences. What do we mean by different sentences? That depends on our speaker. So as a speaker, for example, if you talk about something, then you are a speaker, आप speaker हैं, because you want to talk about something. So as a speaker, you know very well that what you want to talk about, what kind of question you want to ask, what kind of situation you want to use. So you can use any situation. ये आपके ऊपर है. Right? For that situation, we have different structures, different sentences. So what is the point? Important point is that you are super comfortable with all these different structures, sentences, situations, and you are able to use them properly whenever you want to use them. And this is all about the language. You want to ask something, you know the situation, you want to ask particular question. For that, you have a structure, you are able to use that. That's all. So there are different situations, different structures, and you use them properly. So when we talk about you use them properly, so all these things come step by step. So you cannot imagine like this, that if you learn a structure right now, and then you are able to use that very comfortably, right? So what does it mean? It means that you have to keep on using. You have to build the habit of using all different structures, all different sentences regularly from time to time. And that's how you become comfortable. That's how you get into the habit of using different sentences as per the situations. So that's why I always say in the class, practice, 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 and there is no shortcut, right? So there's no shortcut. So don't think that you will learn all the structures, you will memorize all the structures, and then you will be able to speak. No, the structures are important, right? You don't have to memorize them, you don't have to learn them, you only have to understand them as per situations, and then you have to keep on using them, keep on using. So if you do that regularly, continuously, then it becomes natural. Okay. Don't think that if you learn a lot of vocabulary, if you memorize different words, then you would be able to make sentences. No, again, that is not possible because you don't know what kind of sentence you want to use. You don't know what kind of question is being asked to you and how to give answer to that question. So it all depends on the situation. So yes, if you know vocabulary, if you know words, very good, because then you would be able to use. But again, vocabulary is also practiced, and you practice when you make sentences. So जैसे जैसे आप sentences बनाएंगे वैसे vocabulary use होगी situation के हिसाब से, right? And when you use them a lot, so वो फिर वहाँ पे natural हो जाएगा, comfortable हो जाएंगे, because you've been using all those things a lot. So that's why practice, no shortcut. Okay, so keep this important point in head, and keep on practicing, okay, with your friends, in front of mirror, alone. Record yourself, record your answers. Think something about different situations, make sentences, make questions. So do all these things. जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, and उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस मिल रही है. Okay, so if you have friends, sit with them. Okay, ask some questions. Ask your friend to ask you some questions. You give answer, or you can also play
some kinds of some kind of quiz. So let's say you say a positive sentence and then you ask your friend, okay, can you make a negative sentence of this, or can you ask me a question, I will give you the answer. Do all these things, right? And these things will help you to use sentences on regular basis, because प्रैक्टिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी ही है. आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा यू विल सी द रिजल्ट. उतना ज्यादा आप रिजल्ट में ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड कॉन्फिडेंस के साथ साथ जितने भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसमें आप कंफर्टेबल. कंफर्टेबल होने का सेंस ये है कि अब हमको सोचना नहीं पड़ रहा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस, व्हाट डू आई हैव टू यूज हियर. ओके, सो यू आर नॉट थिंकिंग ऑल दोज थिंग्स. यू आर एक्चुअली वट एवर यू वॉन्ट टू से, दैट इज कमिंग नेचुरली. वो नेचुरली आ रहा है, राइट, इजीली आ रहा है, without putting lot of efforts. Okay, so translation भी नहीं होना है वहाँ पे. Okay, so translation भी ज्यादा नहीं करना है. Okay, somewhere you can do the translation where you think that no, I'm not getting how to make this sentence, I'm not understanding this question or this statement, now I need to think in Hindi. Okay, so when you do that, when there is such situation, difficult situation, so then you can take the help of Hindi. But again, it's important, get into the habit of translation all the time. Okay, मैं यहाँ पे क्लास में इसलिए ये हिंदी सेंटेंसेस बोलता हूँ, बिकॉज आई वांट के आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अदरवाइज अदरवाइज हमारी क्लास तो वैसे पूरी इंग्लिश में होना चाहिए, बट कंफ्यूजन ये रहता है कि क्या पॉइंट समझ में आया क्या नहीं आया. सो जहाँ पे ऐसा लगता है कि राइट राइट देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल इन हिंदी, सो देयर आई टॉक. Okay, I make sentences in Hindi. I use Hindi there, right? So ऐसे ही आपको करना है. When there is something very difficult, you can take the help. And otherwise, if you are getting sentences naturally, comfortably, then don't take the help of translation. Okay, just get into the habit of thinking in English, right? And that is thinking in English and using directly in English. Okay, as you do with Hindi, in the as you do with your with any other language, जैसे हम करते हैं, because you are super comfortable, right, with that language, and you know everything, how to talk about anything, how to ask anything, and when you do that, right, it comes natural. चलिए, सो फर्स्ट ऑफ जल्दी से हम पहले ये देखेंगे जो हमने एक एक्सरसाइज ली थी लास्ट क्लास में, जहाँ पे हमने पहले तो एग्जाम्पल किया था सूरज का, जहाँ पे हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे थे कि दैट यू आर मेकिंग सम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट? सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन. ओके, सो जैसे लास्ट क्लास में और इससे क्लास में भी पहले आई गेव यू वन टास्क कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, अपना डेली रूटीन शेयर करिए एंड से समथिंग रिलेटेड टू यस्टरडे, राइट? इन द सेम वे, if you talk about third person, so you have a friend, right? So situation ऐसी है कि क्लास में आपके फ्रेंड हैं एंड आपसे बोला गया है कि चलिए आप अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करिए, राइट? सो वहाँ पे इंफॉर्मेशन, हमको सबसे पहला पॉइंट कि हमें पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हमें अपने फ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि उनका डेली रूटीन क्या है, उनके इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है हमको, राइट? सो यू कैन थिंक ऑफ लॉट ऑफ सेंटेंसेस देयर, राइट, कि क्या क्या हम बोल सकते हैं. सो यहाँ पे हमने जैसे इस टास्क लिया था कि कविता इज अ टीचर, एंड फॉर एग्जाम्पल यू आर इंट्रोड्यूसिंग कविता. Okay, earlier to this example, we took one example related to Suraj, and Suraj was a student. So ये हमारे ऊपर इमेजिन करते हैं हम कि इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे कि हम क्या बोल सकते हैं. Okay, just to make sentences. So you can say Kavita is a teacher. She is hardworking and extrovert. Last year, she was in a different school and enjoyed a lot. Okay, next year, she will try to apply for a government job, right? She has a busy routine, or her routine, we can also say her routine is, and then you can start with next sentences. She has a very busy routine, she has a wonderful routine, so you can make changes, right? जो भी आप changes करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. ये तो example है, so that's why we are taking like this. So she gets up early in the morning, after that she freshens up and then she gets ready. After that she takes breakfast and then she goes to school. In school she takes 6 periods,
and she also helps in office work. Okay, you can also add, and sometimes she helps in office work. So ये जो छोटे छोटे changes हैं, you can do that as per your understand. She takes lunch in school with her colleagues. You can also say she doesn't take lunch in school. She takes lunch at home. So it depends, right? Situation, whatever you want to say. She comes back at 3. She comes back home at 3. After that, she takes rest and she does household chores. Okay. Sometimes she goes to the market to buy vegetables. So these are the examples, right? These are the examples in terms that you are talking about someone. So you are trying to give her introduction. You are trying to share her daily routine, his daily routine. So it could be anything. Okay. So let's make some sentences related to yesterday. So she got up little late. She got up little late. You can say here the hint is she got up a little early. So we are using she got up a little early because she had to attend a meeting. Because the situation is past, so that's why had to use curling because you are talking about past. So because she had to attend a meeting, so she freshened up, she got ready. She got ready, and but she missed the school bus. She got ready, but she missed the school bus. So that's why she caught the auto to reach school. Right. So we are using a second forms. Why? Because we are talking about something happened earlier, yesterday here in this example. She came back in the evening around 5. She came back home at 5. Okay, and remained at home. And she spent time with her family. So like these are simple sentences. So ये जो example है, ये example इसलिए है कि आपको भी ऐसे try करना है. You have to think different sentences. यहाँ तो हमने example के लिए sentences देखा. Like this also you have to think different examples and you have to talk about it. Okay, better ये है कि बोल के देखें. Because when you speak you understand that yeah, sentence comes like this, right? This is the sense of the sentence. So you have to keep on doing it, and जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हो बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली फ्लुएंसी वो आएगी ही. ओके, सो यस, नेक्स्ट वन. All right. Now I shared this exercise also, and I hope that there would be no difficulty in terms of completing this exercise. But even then, go through this exercise to see if there was any confusion, then you understand that part. Okay. So now we had 3 different situations, and what was the important point? सबसे पहला important point था कि sentence पढ़ के आप उसकी situation समझ जाएं, because there are small hints. Okay, small hints in all these sentences that help you understand what is situation. Is it present? Is it past? Or is it future? Okay, last summer, this is the hint. So someone is talking about last summer. Last summer, bonfire while camping. So last summer, we had, okay, because that is the past of have, because you are talking about last summer. Now, she always, always, it means something related to the habit of the person, right? She always, what? She always wears a helmet when she rides a bike, right? I'm sure that there wouldn't have been any difficulty in terms of answering these incomplete sentences. Okay, I think Lavanya, okay, this is the hint. Okay, so we'll use this hint. We'll go to the park tomorrow after lessons. Okay, simple. Okay, now every day, uh, taking the hint from every day, it means something a person does on daily basis, on everyday basis. So what does she do? She listens to music every day. All right.
when he was a kid. This is the hint. So someone is talking about past situation. So Rahul collected model cars, small cars, right? That children play with. Hmm. So Rahul had the habit of collecting model cars when he was a kid. Okay. Jay and Kavita yesterday. All right. This is the hint. Simple. So we need to make negative sentence. This is the hint given here. So Jay and Kavita didn't. Okay. We are using the contraction form of did not. Didn't play. All right. If you want to make it positive, make it positive. Jay and Kavita played badminton yesterday, like this. So whenever you complete any sentence and you see the possibility of making other sentences also, for example, positive, or you can also ask question. If you can do that, right? Give it a try. How to make positive, how to make negative. Okay. Okay. Next one. All right. Again, the hint is every day. Okay. So question. Does Kevin do his work every day? Now, this is the question. Give the answer. Okay. Try the positive answer also, negative answer also. So what is happening? This way you are unknowingly, right? Practicing different sentences. Okay. Last night, okay. The hint is last night. What did she do? She watched a movie on TV for 3 hours. Okay. Mm, lesson soon. Soon. All right. So someone is talking about soon. So will Komal start her guitar lesson soon? क्या कोमल अपनी guitar lessons जल्दी start करेगी? Right? So this is the sense coming because it's a question. Give the answer. All right. Honey. All right. So this is the name of a person. Okay. So honey is honey, right? Honey bee hai. लेकिन this is here name of a person. So honey. Uh, okay. Now, see, B is here. So you will use was not ka short form, wasn't. Honey wasn't be surprised. Okay. Yeah, honey was not be surprised. What will you say? Will you say like this? Honey was not surprised or wasn't be surprised. So here you what is the hint given कि ये जो be है ये किसका यूज हो रहा है ये आपको यूज करना है be verb to be का be राइट सो ये वर्ब टू बी के लिए हिंट है तो यहाँ पे हमको ये नहीं सोचना है कि यू हैव टू ऐड बी अलग से सो यहाँ पे बी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं सो यहाँ पे सिंपल हमारा सेंटेंस आएगा wasn't honey wasn't surprised at his test result when he comes to school tomorrow ओके सो विल इट कम लाइक दिस क्योंकि हम यहाँ पे सरप्राइज देख रहे हैं तो क्या हम इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ओके क्योंकि सरप्राइज है अब ये देखिए कि सरप्राइज यहाँ पे वर्ब नहीं है सरप्राइज यहाँ पे एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है ओके एंड सेकंड हिंट ये देखें कि यहाँ पे हमको टुमारो की बात हो रही है सो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग टुमारो इट मींस फ्यूचर सो क्या यहाँ पे wasn't बी की पॉसिबिलिटी है राइट नहीं है सो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए हमारा सेंटेंस होना चाहिए हनी won't be so you will complete the sentence using won't be ओके सो यहाँ पे सबसे पहला कंफ्यूजन ऐसे ही होगा कि हमने सिर्फ नॉट बी सरप्राइज देखा इतने में ही देख के यहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा यहाँ पे शायद wasn't आना चाहिए एंड बी भी आना चाहिए सो उस सिचुएशन में हमको क्या पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए ओके फर्स्ट रीड द फुल सेंटेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ओके एंड अगर ऐसा हमने सोच भी लिया कि वॉजन के साथ बी आएगा तो भी गलत है राइट क्योंकि वॉजन के साथ बी नहीं आना है सिर्फ अगर हम वॉजन से सेंटेंस यूज करते तो हमारा सेंटेंस होता हनी वॉजन सरप्राइज्ड ओके हनी सरप्राइज नहीं था ये सेंस होता लेकिन हम आगे चल के देख रहे हैं कि ये तो टुमारो की बात हो रही है सो इट मीन्स यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है सो टुमारो से हमको सिचुएशन को मैच करना है सो व्हाट विल यू यूज विल नॉट बी
Short form of will not is won't be. So here we will not use this. We will use won't be. Why? Because we are talking about tomorrow. Okay, this way. Okay, सेंटेंसेस में ऐसे कंफ्यूजन होंगे. सो ऐसे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए रीड द सेंटेंस कंप्लीटली. एंड ये ऐसे छोटे छोटे से कंफ्यूजन आएंगे. सो सरप्राइज एडजेक्टिव भी है, सरप्राइज वर्ब भी है. जब आप उसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो भी ईडी लग जाता है. राइट, सो पे अटेंशन. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस ट्राई किया, हनी वोंट बी सरप्राइज, ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर का तो है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बी भी यूज हुआ है एंड उसके बाद एडजेक्टिव यूज हो रहा है. तो ये हमारा इसका है फ्यूचर वर्ब टू बी का सेंटेंस है. ओके, इसमें फिर आप ये देखेंगे, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि फ्यूचर के सेंटेंस में हम नॉर्मली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. ओके, यहाँ पे सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, एंड इसलिए हम बी यूज कर रहे हैं. ओके, सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है. ओके, चलिए धीरे धीरे ध्यान हो जाएगा. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इफ यू पे अटेंशन देन इट्स ओके. ऑलराइट, हमीद, सम इयर्स अगो. सो पहले पूरा पढ़ लेंगे. सम इयर्स अगो की बात हो रही है. सो व्हाट इज द पॉइंट? वेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ गो. साइट सीइंग मतलब घूमने फिरने जाना. साइट सीइंग इन मनाली सम इयर्स अगो. आई थिंक मार्कस अगेन सून आ गया. सो लाइक सिमिलर सेंटेंस, जल्दी ही क्या होगा? मार्कस विल विन अ प्राइज एट अ कॉन्टेस्ट सून. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है. राइट, आई थिंक मेरे ख्याल से. सो बोथ वेज, आई थिंक लगता है, मेरे ख्याल से. ओके, लास्ट समर. Okay, now this is question mark. So how will you ask? Did Ravi visit Chennai last summer? Yes, he visited. No, he didn't visit. Okay, like that. They often, they often, okay, here, this is the hint. They often, talking about habit. Aksar, they often feel homesick when they are away from home. Homesick, घर की याद आना. Right? So they often feel that way when they are away from. जब घर से दूर होते हैं तो उनको घर की याद आती है. Alright? So घर की याद आने के लिए we use the term homesick. She, yesterday. So सिंपल, यस्टरडे की बात हो रही है. इट सिंपली मीन्स वॉक. ओके, काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमने क्लास में डिस्कस किया था जहाँ पे वॉज वर्ब भी आता है. उन सेंटेंसेस में हम वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म्स यूज नहीं करते. वहाँ पे नाउन्स एडजेक्टिव्स यूज होते हैं. जैसे अभी हमने एक फ्यूचर का एग्जांपल देखा जहाँ पे बी यूज हो रहा है. सेम वे वर्ब टू बी के सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं. एंड जो पास्ट इंडेफिनिट है, जहाँ पे पास्ट में एक्शन की बात हो रही है, एक्शन इट मींस वर्ब. सो अगर वर्ब है सो पॉजिटिव सेंटेंस है फर्स्ट फॉर्म. अगर नेगेटिव है देन डिडंट यूज करेंगे. सो फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा डिडंट के साथ एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म. ओके, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है, बिकॉज यही जो है पॉइंट्स, इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही ज्यादा कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं. ओके, सो make sure that you understand all these points. Okay, चलिए गुड. सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हो गई हमारी. अब नाउ लेट्स गो बैक टू, all right, going to share my page with you. Okay, सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प लेके दूसरे एग्जाम्पल्स भी सोचिए. उसमें से बीच बीच में से कुछ ना कुछ चेंज कर दीजिए. ओके, चेंज कर दीजिए. कभी सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, कभी कोई वर्ड चेंज कर दीजिए. जो वर्ब आ रहा है वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्ले आ रहा है. राइट, तो वो कुछ और वर्ड चेंज करके उसको यूज करिए. राइट, वॉच कर दीजिए. राइट, अब फॉर एग्जाम्पल प्ले बैडमिंटन है तो ऐसे नहीं करेंगे वॉच बैडमिंटन. ऑफ कोर्स वॉच के साथ हम बैडमिंटन यूज कर सकते हैं, लेकिन वॉच के साथ बैडमिंटन को भी चेंज कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल टीवी. ओके, सो डू दीज स्मॉल चेंजेस एंड देन अगेन मेक योर ओन सेंटेंसेस. ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये तो डेफिनेटली आपके पास सेंटेंसेस हैं, इनकम्प्लीट हैं, हालांकि आप उनको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन थिंक कंप्लीट सेंटेंस. Okay, when you are trying, when you are practicing, because that will also help. वो भी आपको काफी हेल्प करेगा जो आप फ्रेश सेंटेंस खुद से सोचेंगे.
चलिए अब हम सिंपल सा जो हमारा टॉपिक है, राइट, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं, हाउ टू यूज दिस वन. सो टुडे it's 30th day, all right? And 30th day पे we are going to talk about or we are going to understand how to make sentences, how to understand the situation that is known as present continuous. It is very simple, very easy to understand. Okay, that's something when you talk about that action is in progress. So कोई भी action, again यहाँ पे action की बात हो रही है, it means verb. जहाँ पे भी action की बात हो रही है वहाँ पे verbs आ रहे हैं, right? जो action हम daily basis पे करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डेली रूटीन, वहां पे भी वर्ब है. जो एक्शन हमने कल किया, लास्ट वीक किया, यस्टरडे किया, वो भी एक्शन था, वहां पे भी वर्ब है, राइट, इन सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डिडंट के साथ. यहाँ पे जो सिचुएशन है, द सिचुएशन इज टेलिंग यू, गिविंग यू द हिंट दैट एक्शन इज इन प्रोग्रेस. जो एक्शन है वो प्रोग्रेस में, एक्शन इज हैपनिंग. When you use sentence with present continuous, when you make sentence, you simply want to give the idea that something is going on. कुछ चल रहा है, हो रहा है, right? Progress में, progress में, continuation में, right? And when you want to talk about it, then you will use present continuous. Okay? So for example, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप वीडियो देख रहे हैं, so something is happening. Okay, action is in progress, progress में है action, that you are doing some. Okay, I am speaking right now. Okay, so the action is in progress, progress में है action. Okay, I'm teaching, so this action जो है progress में. Okay, so something, when you say, when you want to talk about something is in progress, action is in going, action is going on, there you use present continuous. ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, कंटिन्यूअस चल रहा है कोई भी काम. ओके, उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, अगेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, सो हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं स्ट्रक्चर्स पे. When you make positive sentences, so again you have to take care of subject. ओके, नाउ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, एंड जैसे यहाँ पे वर्ब टू बी में, जब वर्ब टू बी हमने किया था तो आपने ध्यान दिया था कि आई के साथ हम एम यूज कर रहे थे. यहाँ पे भी वैसा ही होगा. डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, और एक्शन भी वो जो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेस में है. एंड ये प्रोग्रेस को दिखाने के लिए आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यू नीड टू ऐड आईएनजी. जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम एक्शन शो करने के लिए, दैट दिस इज हैपनिंग, ये हो रहा है, उसमें यू विल ऐड आईएनजी. ओके, यू विल ऐड आईएनजी. एंड ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, इसको हम V4 भी बोलते हैं, वर्ब 4 भी बोलते हैं, राइट. लेकिन ध्यान ऐसे ही रखेंगे कि कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेस हैं, जहाँ पे एक्शन की बात हो रही है, हो रहा है एक्शन, वहां पे हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ आईएनजी ऐड करना है, वो शो करने के, गोइंग ऑन, चल रहा है, अभी एक्शन चल रहा है. सो ये आईएनजी आपको शो करके दिखाएगा कि ये एक्शन चल रहा है. ओके, एंड यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप इज यूज करेंगे. सो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, थर्ड पर्सन है, उसके साथ आप इज यूज करेंगे. ही, शी, राहुल, रवि, राइट. इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. इफ यू टॉक अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आई, यू, वी, राइट, दे, राइट. जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट जिनको हम कंसीडर करते हैं, सबके साथ आर, एंड जहां पे भी आई यूज होगा वहां पे एम. एंड सारे ही सेंटेंसेस में यू विल ऐड आईएनजी. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू से शी इज स्टडिंग राइट नाउ, ओके, इफ यू मेक दिस सेंटेंस शी इज स्टडिंग राइट नाउ, इट मीन्स आप क्या बताना चाह रहे हैं, दैट एक्शन इज गोइंग ऑन. वो जो एक्शन है पढ़ाई करने का, वो चल रहा है, राइट. एंड वो चीज हमको किससे समझ में भी आ रही है, राइट नाउ से भी समझ में आ रही है. तो ये भी एक हिंट है. राइट नाउ मतलब अभी, शी इज स्टडिंग राइट नाउ, वो अभी पढ़ रही है. ही इज प्लेइंग एट द मोमेंट, सो ये भी एक हिंट है, राइट, दैट एट द मोमेंट, एट द मोमेंट समथिंग इज गोइंग ऑन. एट द मोमेंट माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर. तो क्या हिंट मिल रहा है कि अभी वो ये काम कर रहे हैं. ओके, एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में, he is doing that task, he is playing
एट द मोमेंट. सो अभी एक्शन प्रोग्रेस में. ओके, सो हम ये नहीं बोल रहे. ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस. ये हम ये नहीं बोल रहे कि वो ऐसा करता है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैबिट्स. ओके, हियर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, अभी जो प्रोग्रेस में चल रहा है. ओके, सो व्हेन यू यूज प्लूरल सब्जेक्ट, you, we, they, right? Lot of people are. ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा क्या डिफरेंस है, बस आपको इज एंड आर. ओके, ये तो नॉर्मली हम वैसे भी सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं, तो कंटिन्यूअस, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. एंड आई के साथ यू विल यूज एम. All right, and everywhere you are using ing, and all these sentences are positive sentences. Okay, I'm answering questions right now, I'm speaking right now, so this is in progress. I'm speaking right now, right? I am sitting next to my friend. ओके, सो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सेंटेंस यूज हो रहा है, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ हूँ, सो इट इज इन प्रोग्रेस, वो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, राइट? अगर आंसर दे रहे हैं तो अभी वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं राइट नाउ. सो ये हिंट है, ये वर्ड्स हिंट है, राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ. तो कंटिन्यूअस जब हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, तो नॉट ऑल द टाइम, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ, majority of times we use these terms, right now, at the moment, now. Okay, so for example, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर. आप ये भी बोल सकते हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ. आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर एट द मोमेंट, अभी इस वक्त मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नाउ, मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ. Okay, so these are the terms. Okay, but the sense is very simple, that action is going on, action is in progress. किचन में मदर है, राइट? शी इज डूइंग समथिंग, कुछ कर रही हैं, तो हम यही बोलेंगे दैट माय मदर इज डूइंग समथिंग, माय मदर इज कुकिंग फूड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रदर जो हैं वो पढ़ रहे हैं, एक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअस है, सो यू विल से माय ब्रदर इज स्टडिंग. ओके, लेकिन हम उसकी अगर हैबिट बताते हैं कि मेरा ब्रदर रोज पढ़ता है, सो देन यू विल से माय ब्रदर स्टडीज डेली. फिर देन दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. ओके, सो कंटिन्यूअस में सिंपल सा हमको यही ध्यान रखना है कि जब भी ये यूज हो रहा है, तो आप ये बता रहे हैं कि वो काम उस वक्त हो रहा है, चल रहा है, राइट? इसलिए हम कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं. ओके, सो अगर अब आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, ओके, एंड आप बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, हम सोच रहे हैं कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, एंड हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस आई एम गोइंग टू स्कूल. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे ही आपने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहां पे क्या सेंस निकलेगा कि आप वो एक्शन कर रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं. लेकिन अगर आप बोलते हैं आई गो टू स्कूल, तो आप एक बता रहे हैं, राइट? एक अपने बारे में बता रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट दैट योर हैबिट और योर डेली रूटीन, दैट आई गो टू स्कूल डेली. ओके, चलिए सेंटेंसेस यूज करके देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. इजी है, लेकिन ट्राई करके देखेंगे तब देखेंगे या तो कंफ्यूजन आ रहा है, नहीं आ रहा है, या एक्चुअली में इजी. ओके, सो ऑल दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस. व्हेन यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस एज इट इज, जैसे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं एज इट इज रहेंगे, बस उसमें आप सिंपल सा क्या टर्म यूज कर देंगे फॉर नेगेटिव टर्म? नॉट. सिंपल सा हम बस नॉट यूज कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है. आई एम नॉट. ओके, एंड व्हेन यू यूज नॉट, यू आर गिविंग नेगेटिव सेंस के कोई भी एक्शन उस वक्त नहीं हो रहा है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट स्टडिंग राइट नाउ, ही इज नॉट प्लेइंग एट द मोमेंट. सिंपल सेंटेंसेस. अब यहाँ पे आपके लिए टास्क यही है कि यू थिंक अबाउट योर ओन सेंटेंसेस. ओके, थिंक अबाउट योर ओन कंटिन्यूअस सेंटेंसेस. Think about them, try them, make them, right? Understand them. Understanding तो clear हो गई होगी, because not difficult to understand. Simply हम उनको use कर रहे हैं continuous situation में, right? अब आप कहीं पे जा रहे हैं, so you will say I'm going. नहीं जा रहे हैं, so you will say I'm not going, right? He is going, you are going. I'm not studying, मैं नहीं पढ़ाई कर रहा हूँ. He is studying, वो पढ़ रहा है. सब continuous situation को बताने, right? All right. So here you will make negative sentences, present continuous sentences, and simple as it is a structure A, we are only using not. We are adding not here. All right.
चलिए, understood. Next, we are going to see how to make questions related to uh, present continuous. And that is also easy. जैसे कि हम हर सिचुएशन में देखते हैं कि जब हम क्वेश्चंस यूज करते हैं तो जो भी उसका रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले हो जाता है यूज. सो यहाँ पे भी राइट, इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन, कंटिन्यूअस क्वेश्चन, you want to ask question related to singular subject, you will start your question with is. So this is the simple thing, right? Is any subject, singular subject, he, she, Rahul, Ravi, Kavita, mother, father, singular, right? Asking question. Then you will make question like this. Is she saying anything? Okay, so is she saying anything? क्या वो कुछ बोल रही है? Is she saying anything? Is Ravi studying in the class? Okay, so this question is also you are asking when the action is going on and you want to know. आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो एक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, इज शी सेइंग एनीथिंग, then you have two possibilities. Yes, she is saying something, or no, she is not saying anything. Is Ravi studying in the class? Yes, he is studying in the class. Or no, he isn't studying in the class. He is watching TV, right? If you want to say uh, action is going on, okay, he is watching TV, right? सिंपल सा ये भी आंसर हो सकता है, नो, Ravi is not studying in the class. He is at home. वो घर पर है. So sentence, वो घर पर है. He is at home. So you need to understand these different sentences. कहाँ पे कब use करना है. That depends on the speaker, right? आपके ऊपर what are you thinking and how you want to use it. Okay? Question is coming. Are children knocking at the door? So ये जो question है ये continuation में चल रहा है, right? So अगर ये question पूछा जा रहा है, are children knocking at the door? So it means children are at the door and they are doing this action. वो ये action कर रहे हैं. That's why this question is coming. Are children knocking at the door? So again, what is the possible? Yes, children are knocking at the door. No, they aren't knocking at the door. They are playing in the ground. So as per the situation, uh, use your own sentences. Okay, so these examples are examples to understand situation, to understand the formation of different sentences, positive, negative questions, but then you have to use your own sentences, own questions. Are you listening to me? So for example, right now I'm speaking, I'm talking to you, so action is going on, and now I ask this question, are you listening to me? Okay, so I'm asking this question because the action is going on. Are you listening to me? So you say that yes, we are listening to you. No, we are not listening to you. We are reading the text. Okay, we are reading these examples. Okay, like this. So it could be anything, but the important part is that you understand and then you use. Okay, use जब आप खुद अपने sentences use करेंगे, वो actual आपकी understanding, ये तो हेल्प है. ओके, ये एग्जाम्पल्स हैं. एम आई स्कोल्डिंग यू, राइट? मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया. राइट नाउ क्लास इज गोइंग ऑन एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन, एम आई स्कोल्डिंग? So what will you say? You will say, no, you are not scolding us. You are telling us. You are giving us these examples. You are teaching us, right? So sentences are coming in continuation, right? Because the situation is like this. Action is going on, right? Action is in progress, and you are making similar sort of sentences, asking questions. Okay, am I sweating? I think no, you are not sweating because you are wearing jacket. Yeah, you are sweating because you are wearing jacket. So it could be anything, right? So it depends कि आप उसको कैसे use करें. But the point is that you use, right, sentences a lot to understand them in a better way. And for that, you have to think a lot of different sentences. You have to make a lot of different sentences. And present continuous ऐसी situation है that is commonly used, right? Commonly use होती है. So यहाँ पे कोई difficulty नहीं होगी और easy भी है, right? हमको ing लगाना है, is rm use करना है, that's all. Action हो रहा है, right? Continuation में कोई progress चल रही है action की, and you are using sentences in continuation. Okay, so that's how you will make questions.
Next important one is that you ask questions with WH words also. Okay. When you use WH words, so जैसे हमारा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है एज इट इज रहेगा, बस वहां पे WH वर्ड ऐड हो जाए, right? So because you are asking question using WH word, what, why, where, how, why, okay? WH word use कर रहे हैं, okay? So WH word भी जब यूज हो रहा है तो क्वेश्चन यही होगा कि क्या ऐसा हो रहा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ही डूइंग इन द क्लास, वो क्लास में क्या कर रहा है, क्या एक्शन चल रहा है, okay? क्या एक्शन प्रोग्रेस में, सो व्हाट इज ही डूइंग इन द क्लास, ओके, सो व्हाट इज ही डूइंग इन द क्लास, सो जैसा क्वेश्चन वैसे ही आंसर, ही इज स्टडिंग इन द क्लास, वो क्लास में पढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछा वो क्या कर रहा है, आंसर आया वो पढ़ रहा है, राइट? ही इज नॉट स्टडिंग इन द क्लास, राइट? ही इज राइटिंग समथिंग, he is reading something, so it could be anything. Where is she going? Where is she going? She is going to market. She is not going anywhere. She is at home. She is at home and she is watching TV. She is at home. She is completing her work. So जितने भी ये sentences आ रहे हैं वहाँ पे sense यही निकल रहा है कि action जो है progress में, right? Action चल रहा है, right? And that's how we use present continuous sentences when you talk about similar kind of situations, when you want to give the similar kind of message that action is happening, going on. ओके, एंड अगेन यहाँ पे सिंपल सा जो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू वेयर टू यूज इज, वेयर टू यूज आर एंड वेयर टू यूज एम। सो यहाँ पे बस यही एक छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना है, बिकॉज इज आर एम भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो सिंपल सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई, इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, इज आर एम। सो जैसा सब्जेक्ट वैसा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, ओके। वैसे ही पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, what are you doing in the class, okay, what are you doing in the class, right? What are you है are इसलिए आ रहा है, right? So understand these simple things. What are you doing in the class? hmm I am studying in the class, I am listening to the teacher in the class, I am sitting with my friends in the class, okay, I am taking lunch with my friends in the class. So as per the question, answer is coming. Why are they shouting? Why are they shouting? Why are they shouting? What is the reason? Okay, they are shouting because there is no one in the class, because there is no teacher in the class. They are shouting because they are happy. Okay, they are shouting because they have a free period. So it could be anything, right? That depends कि आप कैसे उसको use करना चाहते हैं. Okay. What am I doing? What am I doing? अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, right? What am I doing? Okay, like that. Okay, so is are. Okay, these are the simple three terms, helping verbs that we use in order to make different sentences related to continuous sentences. And continuous में आप ing forms use करते हैं. So you add ing in verb first form, right? And understand the situation. That situation is that work is going on, action is in progress, and that's why we make sentences with the help of these structures. कंटिन्यूअस के जो sentences हैं उनके जो structures हैं हम इसलिए फॉलो कर रहे हैं बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट, व्हेन आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक्शन जो है वो प्रोग्रेस में, ओके। सो इस तरह से बस इसको ध्यान में रखिए। एंड देन अगेन इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट यूज देम अलॉट, राइट? इजी है बट यू अंडरस्टैंड बेटर व्हेन यू यूज देम। I would say that present continuous जो है वो easily you will understand, easily you will make sentences, different sentences. Somewhat present indefinite and past indefinite, it's somewhat tricky because there are some changes that you need to take care of, right? So again, there is one more structure for you, right? So now a present continuous भी add हो गया है, right? हमारे पास already दूसरे structures हैं, उसमें अब present continuous भी add हो गया है. So understand that according to these different situations, जितने भी situations हैं उनके according जहाँ पे जैसी situation you will use the structure there, right? जैसी situation वैसा structure. If you want to ask something related to the work is going on, the work is in progress, you will ask a question with the help of that particular structure. If you want to talk about something related to the habit,
you will use that particular structure. If you want to talk about something happened earlier or in past, you will use a structure like that. If you want to talk something related to possession, okay, you will use similar sort of structures that give proper sense related to the situation. Okay. All right, so आया समझ में। यहाँ पे आज क्लास में हमने एक सिंपल सा टॉपिक कंटिन्यूएशन वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया। एंड देखिए, टॉपिक के साथ अगर हम उसको प्रैक्टिस में लेके रखेंगे, राइट, प्रैक्टिस करते रह रहे हैं, ओके, यू आर मेकिंग डिफरेंट सेंटेंसेस। सो आइडिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, सिचुएशंस वन बाय वन लेने का यही है कि दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग दैम। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये हम एक साथ भी कर सकते हैं, राइट, इजी टू डू, इजी भी है, राइट, कि हम एक साथ सब कर लें, नहीं, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं जब तक आपको उसकी हैबिट नहीं है यूज करने, इट इज यूजलेस। ओके, वो यूजलेस है। वो सिर्फ ऐसा है कि हाँ, हमको अंडरस्टैंडिंग तो है, हमको क्लियर तो है दैट या दिस इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस, वी यूज इन पर्टिकुलर इन वी यूज इट इन पर्टिकुलर सिचुएशन, बट व्हेन इट कम्स टू using but when it comes to talking about different situations, right, there it's important that you are comfortable, right, फिर वहां पे जहाँ पे आप उसको properly use कर पा रहे हैं, फिर वो आपका comfort level, so that's why it's important to get into the habit of using them, so you are super comfortable with different situations, and इसमें थोड़ा सा time लगता है, right, habitual होने में एकदम से habitual नहीं होती कि हमने structure पढ़ा and then you are using them correctly, confidently. But when you do regularly, then definitely confidence, you build up your confidence, you build up your fluency, you build up your comfort level in terms of using them properly, right? Without translation. That is important. Okay, चलिए। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जो हमारे कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हमने समझे हैं, सिचुएशन समझी हैं, एग्जांपल्स देखे हैं। We'll see how to use it in a situation, right? So with the help of some examples, we'll try to make sure that you are making sentences. Okay, so class में तो examples हैं, लेकिन आपको खुद से भी कोशिश करनी है कि you are thinking different sentences, you are using different examples, you are using different situations to make sure that you are using different sentences, because that is only helpful. सिर्फ वही helpful है if we talk about speaking, if we talk about spoken part, right? That is important. Okay, everyone. So this much for today, and we will continue in the next class. We'll do some exercises related to this situation. Okay. And yes, important part is that keep on practicing. Make sure that you do practice on daily basis. Okay, you use different situations on daily basis. And as you are aware of that, there are other classes that you can also do, that you can also watch. Okay, so you can watch level 1 also. There are other classes going on. So you can, if you are in 10th, 11th, 12th, or 9th, you can also watch those different classes. You can learn a lot from those classes. Okay, you can tell others, you can tell your friends about these classes. So spread the message. Okay, spread the message. And yes, we will continue in the next class. Till then, take care. Bye bye.